So we had started talking about the the different formats that we are supposed to prepare when it comes to the income statement. Today we'll be discussing these formats, in what way those are prepared, what is the information that is covered in those respective formats. Because when it comes to the preparation of final account, this is very much necessary. Because I prepare the manufacturing account with an intention to know the cost of production. So all the information related to the manufacturing of goods should be covered in the manufacturing account. When it comes to the manufactured goods to be sold in the market, or when I'm not a manufacturer, I'm only buying and selling the goods. For that purpose, we prepare the trading account. In the trading account, we basically include only the information related to the direct expenses and direct incomes. Because trading account is prepared primarily for the purpose of identifying the total gross profit or the prime profit from our business. For that purpose, we prepare the trading account. And with the help of the profit and loss account, we try to identify what is the net ultimate profit of the business. So let's understand these all formats one by one now. The very first in that is manufacturing account. Manufacturing account. Manufacturing account, trading account, and profit and loss account are all three are the nominal accounts. All three are the part of the income statement prepared to ascertain cost of production. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी तुमने गुड्स बनाया है पूरा साल भर में, उन सब का कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए वी प्रिपेयर दिस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. In fact, you people can start your videos so that I can understand where you are looking at. All right. Well, it being a nominal account, all the expenses will be put onto the debit and all the incomes. In fact, manufacturing account में किसी भी तरह की income नहीं होती है, because manufacturing account, I said, is prepared to ascertain the cost of production, and therefore there is no question of having any income in the manufacturing account. So all the expenses are debited to the manufacturing account. Whatever amounts will reduce the expense of the manufacturing will be put onto the credit of manufacturing account, and the net result, the net balance of manufacturing account, is what we call as the cost of production. All right, just write a note on this. All expenses related to manufacturing all expenses related to manufacturing are debited to manufacturing account, whereas the expenses those reduce the cost of production, the amounts those reduce the cost of production are credited to it the net balance, therefore the net balance therefore the net balance of manufacturing account, the net balance of manufacturing account
represents the cost of production. The cost of production of finished goods. Of finished goods. All right. So now look at this format, that what all information we are going to put into this. Now, whatever is the production that has to be done will start with the raw material only or not. So whatever is the raw material that you have purchased for production activity, that the cost of that all raw material will come into your manufacturing account. So manufacturing account debit side to purchase, जो हम लोग इतने परचेज अकाउंट बना रहे थे उसमें जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड परचेसेस हैं, those all will total be put into the manufacturing account. All right. Then for the purpose of production, we are going to pay the wages, the labor charges for that. These labor charges is also the expense related to the production activity only or not. And therefore the labor charges or the wages will also be put into the manufacturing account. I am talking about जो हमने पहले परचेज का अकाउंट बनाया, बराबर, पहले परचेज बुक बनाया, परचेज बुक से परचेज अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट का बैलेंसिंग किया, वो बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा. This balance from the trial balance will be picked up and put into the manufacturing account if it is related to raw material. वही अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, ट्रेडेबल गुड से रिलेटेड, जो हमने सिर्फ परचेज किए सेल करने के लिए, those will not come in manufacturing account. Those purchases will directly go into the trading account. क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, तो इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी ऑफ द परचेसेस व्हिच आर नॉट इन द प्रोडक्शन. डिड यू गेट दिस पॉइंट? देन to wages, which are nothing but the labor charges for production activity, that will also be put in here. अब इसके अलावा आपके गुड्स के अलावा, अब सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैकिंग चाहिए, तो उसके लिए जो पैकिंग का खर्चा आएगा वो, या फिर आपको उसके ऊपर और कोई प्रोसेस करनी है, या फिर जो आप मशीनरी यूज कर रहे हो उसका कॉस्ट, दीज ऑल कॉस्ट्स आर कंसीडर्ड एज द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टेक्निकली कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. राइट डाउन द टर्म मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. Manufacturing overheads. These are the expenses in addition to material and labor which are incurred in the process of production. Which are incurred in the process of production, comma, it includes expenses related to factory and machinery, comma, special packing expenses,
and the similar items. And the similar items. All right. So those all will be called as the manufacturing overheads or manufacturing expenses. Am I right? So those all, whichever kind of expenses those maybe the labor, maybe the transport, maybe the freight, maybe the depreciation on machinery, which is used for production purpose, maybe the depreciation on factory or rent of factory, which is used for production purpose. क्योंकि ये सारे प्रोडक्शन से ही रिलेटेड हैं, therefore these all costs, these all expenses in total will be put into the manufacturing account only. Am I right? Here we will be calling that as a single item as manufacturing overheads. बट जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उस समय पे हम लोगों के पास एक ही आइटम नहीं होता है, हमारे पास अलग अलग तरह के आइटम होते हैं. Those all items put together are called as the manufacturing overheads. Am I right? So two manufacturing overheads. इनफैक्ट ये बेसिक अकाउंट में मैंने नहीं भी कवर किया होता तो भी चल जाता, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज देयर ओनली इन फाउंडेशन, इट इज नॉट देयर इन 11th and 12th. The people of commerce also do not do the manufacturing account, but why I'm covering it, because it is there specifically applicable for your CA foundation studies also. हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे ऑफ रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट, इन दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन एनी ऑफ द टॉपिक्स, एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स. There will be preparing only trading and profit and loss account. But यहाँ क्यों मैं क्यों ये explain कर रहा हूँ, because this is having the direct relation in your foundation syllabus, and that's why I'm covering it specifically. All right. Now, is it necessary कि जितना आपने goods खरीदा था, जितना आपने raw material खरीदा था, वो सारा का सारा utilize हो गया? There can still be a situation at the end of the year that some of your goods are still remaining to be used or not. We call that as closing stock. Now, whenever you are preparing your final accounts, at that time you are supposed to do the accounting for your closing stock. So if it is the stock related to the raw material, that stock related to raw material will reduce the cost of production for current year or not. If you remember, I talked about something called as matching principle. The matching principle says what? That you need to match the expenses for the year with the income of the same year. अब अगर आपको इस साल के expenses इसी साल की income के साथ match करने हैं, तो for that purpose you will be required to reduce the cost of production to the extent the goods are not yet been used. Like take for example कि आपके जो goods हैं वो आपने जितने खरीदे थे उसमें से उसका कॉस्ट आपने डेबिट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, बराबर. पर उसमें से जो गुड्स बचे हुए हैं दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, तो उतने से आपको आपका खर्च कम करना पड़ेगा या नहीं? I said the amounts that increase the cost of production will be debited to the manufacturing account. सारंग बरोबर चलेगा? So the amount of expenses or amount of raw material which is not yet been used will not be treated as expense of current year. और क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो इस साल के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से उसे रिमूव करना चाहिए या नहीं. And therefore either you reduce it into the manufacturing account debit side from the purchase of raw material, or you show it onto the credit side of manufacturing account. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में उसको रिड्यूस कर दोगे तो अपने आप वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा. या फिर अगर आप डेबिट में कम नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपका अकाउंटिंग अफेक्ट होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर और नॉट. आपने कहा वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसका मतलब वो अगले साल का एक्सपेंस बन जाएगा या नहीं. So when you want to carry it forward from 1 year to another, you can do it by transferring the cost to the next year, and therefore onto the credit side of manufacturing account we put the closing stock by
closing stock of raw material. All right. Now, similar to raw material, it is not necessary that the whole of the goods that you have processed, आपने रॉ मटेरियल पे प्रोसेस चालू की, प्रोडक्शन चालू किया, इज इट नेसेसरी कि जितना आपने गुड्स प्रोड्यूस करना था वो सारा का सारा प्रोड्यूस हो गया? कि अगर आपने 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पे प्रोसेस स्टार्ट की, 100 के 100 यूनिट्स फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट हो गए, ऐसा जरूरी है क्या? देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर वो रॉ मटेरियल नहीं रहा क्योंकि रॉ मटेरियल पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई, बट वो फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट नहीं हुआ. Such kind of goods is what we call as work in progress. जैसे तुम लोग अभी वर्क इन प्रोग्रेस हो, तुम लोग ना अब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट रहे, ना ही तुम्हारा फाउंडेशन कंप्लीट हुआ. योर वर्क इज इन प्रोग्रेस, isn't it? So similar to that, जो रॉ मटेरियल पे आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दी पर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, वी कॉल दैट एज वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस. अब उस पे किया हुआ खर्च भी यू कैन नॉट ट्रीट एज द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, क्योंकि जब तक वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक वो सेलिएबल नहीं है, और जब तक वो सेलिएबल नहीं है तब तक उसका इनकम नहीं आएगा. जब तक उसका इनकम नहीं आएगा, हाउ कैन आई ट्रीट द एक्सपेंस ऑन दैट इन द एज द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर? बिकॉज एनीवेज उससे रिलेटेड जो इनकम है, उस वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड जो इनकम है, ये कब जनरेट होने वाला है? इन द नेक्स्ट ईयर और नॉट? एंड देयरफॉर द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आल्सो नीड टू बी अकाउंटेड. सो द नेक्स्ट थिंग दैट विल कम इज work in process or work in progress. We call this as WIP. Did you get this? So the cost of this is credited to the manufacturing account so as to reduce the cost of production for current year to comply with the matching principle. Am I clear? Just write down this as a point. The cost of unused raw material and the work in progress is credited to the manufacturing account to reduce the cost of production for current year to reduce the cost of production for current year and comply with the matching principle. And comply with the matching principle. All right. Next line within that, this closing stock is considered as the expense of next year and therefore debited to the manufacturing account in the next year, therefore debited to the manufacturing account in the next year as opening stock. अब सपोज तुमने इंस्टाग्राम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया and then you start looking at the profile of many, you started with opening stock, you start to stock ना, और फिर सपोज आप एकदम इंस्टाग्राम से फेड अप हो गए और तुमने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया, which means you did the closing stock, isn't it?
इंस्टा पे लोग और करते क्या है, खुद के प्रोफाइल से ज्यादा तो उनको पब्लिक के प्रोफाइल में इंटरेस्ट होता है। और एक कोई बंदा प्रोफाइल, कोई किसी का प्रोफाइल अच्छा लग गया तो फिर लाइन से उसके सारे फोटोग्राफ्स, उसकी सारी स्टोरीज देखने, एकदम गहराई में देखते हैं, isn't it? You people stalk the people a lot, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि तुम उसको स्टॉक कर रहे हो। इतना गहराई में घूरना अच्छी बात नहीं है, नजर खराब हो जाएगी, और अगर नजर खराब हुई तो नजरिया बदल जाएगा। नहीं, जाने दो, विल कम बैक। So the closing stock of 1 year becomes the opening stock of next year or not? And because the closing stock of 1 year becomes the opening stock of next year, so in the manufacturing account onto the debit side, I'll put what? To opening stock of what? Raw material and WIP. You people get that? Now, whatever is the balancing figure of this account. Now, remember one thing, manufacturing account is prepared only to ascertain the cost of production. That means the manufacturing account will always have the debit balance. Why? Because it is prepared to ascertain the cost of production. अब अगर cost of production identify करने के लिए बनाया है तो cost तो हमेशा debit ही balance होगा ना, expense है, खर्चा है, तो खर्चाs always have the debit balance. Therefore, on to the credit side, I'll write what? By production cost. By production cost. Now, this production cost is nothing but related to the goods that you have finished, that you have completed producing or not. जो गुड्स आपके बन गए हैं उन्हीं से रिलेटेड ये प्रोडक्शन कॉस्ट है या नहीं? And therefore this cost of production is transferred to our next account. क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सेलिंग का एक्टिविटी नहीं करते हैं, फॉर सेलिंग एक्टिविटी वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट. So this cost of production is transferred from the manufacturing account to the trading account. क्योंकि जितने गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, these all goods will ultimately be sold in the market, therefore we prepare the trading account. Am I clear for everyone? So this is the basic format of manufacturing account. I hope you have understood this. This is my balancing figure. All right, just prepare this format and then I'll go ahead.
डन। आज सुबह मैं सिंहगढ़ नहीं गया प्लान होने के बावजूद, नहीं तो लेक्चर मुझे वहीं से लेना पड़ता। एक्चुअली एक आध लेक्चर तो मैं वैसे ही प्लान करेगा, वहां जाके तुम्हारा लेक्चर लेगा। विल बी फन नो, विद अ काइंड ऑफ खतरनाक बैकग्राउंड। करेगा करेगा, वैसे भी प्लान करेगा। सिर्फ वो बोझा लेके जाना इज टफ, यू नो, वो लैपटॉप आईपैड सब कुछ लेके जाना वहां तक के, दैट इज टफ। अदरवाइज अभी जो एनवायरनमेंट जो सीन है ना वहां पे आजकल, इट्स माइंड ब्लोइंग, अ डिफरेंट काइंड ऑफ फील। आदित्य तू कभी गया है सिंहगढ़? नहीं? अरे तू उधर अपू घर ही गया कर, तू तो पिंपरी चिंचवड़ एरिया में रहता है ना? हाँ, तुम्हारा अपू घर में टेकरी है ना, तू उधर ही गया कर। रत्सान तू कभी गई है? तू पूना में है ना? तू कभी गई है सिंहगढ़ ट्रैक करके, डायरेक्ट गाड़ी से ऊपर नहीं? हाँ सर, हम लोग दही और कांदा भजी खाने के लिए गए हैं सर, वो बहुत अच्छा मिलता है उधर, इजंट इट? प्रतीक्षा तू पूना में नहीं है ना? प्रतीक्षा रेनू? नहीं, तुमको पता भी नहीं होगा ना सिंहगढ़। नहीं सर, ये अभी अभी सुना है सर। सिद्धि तू भी नहीं है ना पूना में? हाँ, दो ही हैं बेचारे पुणे के यहाँ पे, अल्पमत में है। अच्छा सारंग भी इधर के ही है, सारंग जाता है, देख सारंग को तो देख के मालूम पड़ता है सिंहगढ़ जाता है। सारंग गया है तू कभी ट्रेकिंग करके? अच्छा, मजा आता है ना? सर हालत खराब होती है सर, क्या बताएं आपको, हर 2 मिनट के बाद लगता है यार और कितना ऊपर जाना है। इट्स अ क्लाइंब ऑफ अराउंड व्हाट 7,000 steps and only 3.5 kilometer, only 4,500 feet above the sea level। तो बहुत अच्छा मजा आता है। थोड़ा सा रूटीन में आ जाए तो हम लोग जाएंगे एक आध बार। नहीं आदित्य, रफसाना आएगी ना तू? रफसाना अरे सुबह 5 बजे जाते हैं पागल। सर सुबह 5 बजे तो मैं सपने में भी नहीं जाऊं, आप तो रियलिटी की बात कर रहे हो। वेल well, मैं सच में, हम लोग 4:30 बजे घर से निकलते हैं। इफ वी हैव टू गो फॉर ट्रेकिंग, 4:30 बजे हम लोग घर से निकल जाते हैं। देन एंड ओनली देन इट्स फन, यू नो, नहीं तो वो उजाला होने के बाद में चढ़ना, इट्स इट्स वेरी टफ, वेरी टफ। ये बार बार वो टेकड़ी दिखते रहती है यार, और कितना जाना है, वो अंधेरे में मालूम ही नहीं पड़ता है और कितना जाना है। यू जस्ट रीच, इट टेक्स अराउंड 1 hour, सो इट्स अ डिफरेंट फन ऑल टुगेदर। but anyways, जाने दो, हम लोग सिंहगढ़ की टेकड़ी छोड़ के ट्रेडिंग अकाउंट की टेकड़ी पे छुट चलेंगे। So the next account that we need to talk about is the trading account. Yes, Aditya, you need to say something. नहीं ना? हाँ, तेरा एक्सप्रेशन ऐसे लगा मुझे। सर मैं मेरी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट। Now, what is this trading account? This is basically the account which is prepared for trading activity, that is buying and selling or goods produced being sold. Whatever is the profit that we earn by doing our core activity, our basic activity, that all is put into the trading account. So trading account is basically prepared to determine the gross profit of the business. Gross profit means the profit that we earn from the core activity, from our basic activity. That is what we call as the gross profit. All right. Trading account is also a nominal account. So all the expenses of the business or all the direct expenses will be put into the trading account debit side, and all the direct incomes will be put into the trading account credit side. I'm deliberately not putting the columns of particulars amount,
मैं वो हेडिंग्स वगैरह नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको एग्जाम में नहीं लिखनी होती है यहाँ, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग इट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग इट। अदरवाइज तुम बोलोगे मास्टर ने हमको आधा सिखाया, हम पैसे पूरे लिए और आधा सिखाया। जाने दो बाबा, लिख देता हूँ, बात का टेंशन नहीं चाहिए। क्या है, सिंधी आदमी हूँ, पैसा बचा के काम करना पड़ता है। So we'll have the columns as particulars, amount, particulars, amount. This is debit side, this is credit side, right? तो इस तरह का वो फॉर्मेट होता है। Now, if you are a manufacturer, then production cost which you have transferred from your manufacturing account will come to the trading account debit side. But if you're a trader, you'll only have the purchase of goods which are meant for resale or not. So those purchase expenses will also come into your trading account debit side. So in your trading account debit side, you'll have what? To production cost or purchase expenses. Now, whenever we put the purchases into our manufacturing account or trading account, those all are always put in the form of net purchases. Net purchases means what? Total purchases minus returns. You do not put the returns onto the credit side. Returns इसमें से minus करने होते हैं when we present it into our manufacturing account or trading account when it comes to the purchases or sales. जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग परचेज की अकाउंटिंग अलग करते हैं, सेल्स की अकाउंटिंग अलग करते हैं, परचेज रिटर्न की अलग करते हैं, सेल्स रिटर्न की अलग करते हैं। बट जब हम अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं, एट दैट टाइम वी प्रेजेंट एज व्हाट? टू परचेसेस लेस रिटर्न्स। सो फ्रॉम दिस लेस परचेज return and the net amount is what is shown in the amount column. All right, then to direct expenses, like अगर हम मैन्युफैक्चरर नहीं है तो expenses related to purchase of goods, freight, transport, wages, loading unloading charges, cartage, these all are considered as the purchase expenses. So freight etc., wages, these all are put into the trading account debit side. All right, then on to the credit side we'll be having sales by sales. जितने भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किए या परचेज किए which you are intending to resell, which you have sold, those sales value will ultimately come into the trading account onto the credit side. Why? Because trading account credit side indicates, basically the trading account credit side indicates the direct incomes, and therefore the income related to sales will also come into the trading account credit side. From that you'll again subtract what? The sales return, the goods which you have got back from your customers, and the net amount will be presented into the outermost column. Now it is not necessary that all the goods that you had produced in the form of finished goods or all the goods that you purchased, those all are sold. There can still be a situation where you are having the unsold goods or not. Such unsold goods of finished goods are considered as the expense of subsequent year, and therefore you need to show that into your trading account onto the credit side.
closing stock related to raw material or WIP goes into the manufacturing account credit side because it is related to manufacturing activity. But closing stock related to finished goods will come into the trading account credit side because it is related to the goods which are available for trading. Am I clear? So, by closing stock related to what? Finished goods. Am I right? Now, if you remember, we had done the adjustment related to what? We had done the adjustment related to goods lost by fire, goods distributed as free samples. Yes or no? These goods lost by fire, goods distributed as free sample, ultimately are credited to the trading account only. Because all the goods which come in are shown on to the debit side. जब आपने परचेज किया था, जब आपने गुड्स खरीदे थे, उस समय पे परचेज अकाउंट को डेबिट हुआ था या नहीं? अब जितने गुड्स आपके चले गए बाय लॉस और जितने गुड्स आपके चले गए इन द फॉर्म ऑफ free samples, those are goods going out. Those goods going out are removed from your trading account because those are not your direct expenses. Purchase is your direct expense. उसमें से जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए वो आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, तो दैट बिकम्स द इनडायरेक्ट एक्सपेंस. उसमें से जो गुड्स लॉस हो गए वो दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज योर डायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंस. Those expenses are removed from our trading account and put into the P&L account. And for that purpose, all those goods distributed, goods lost are put into the trading account onto the credit side. मैंने आपसे कहा था कि आप अकाउंटिंग एंट्रीज या जो कुछ भी मैंने लिखवाया हुआ है वो रिवाइज करके आना. You must have seen in those accounting entries how have I presented that, and based on that we have done the calculations. Am I right? So on to the credit side we'll have buy goods lost. मैंने कई जगहों पे by purchases लिखवाया है. Those are credited to the purchase account. Why? Because you can either reduce it from purchases or show it into the trading account credit side. Effect, ultimate effect of both will remain same or not. मैं डेबिट साइड के परचेस में से कम करूं या क्रेडिट साइड में उस आइटम को दिखाऊं, अल्टीमेट इफेक्ट अमाउंट वाइज विल रिमेन सेम और नॉट. मान लो डेबिट में मैंने 1000 रुपए लिखे और मेरे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड 200 रुपए के हैं, तो आइदर आई रिड्यूस फ्रॉम परचेस टू रिड्यूस द डेबिट टू 800 रुपीज, और डेबिट का मैं 1000 ही रुपए रखता हूं और क्रेडिट में 200 रुपए दिखा देता हूं. अल्टीमेट इफेक्ट विल रिमेन सेम और नॉट. डिड पीपल अंडरस्टैंड दैट? So that is how the adjustments are done with reference to the goods lost or goods distributed. Now, like in the case of manufacturing account, we had seen that the goods, the closing stock related to the raw material or WIP becomes the opening stock of next year or not. Similar to that, the closing stock of finished goods related to 1 year will become the opening stock of next year or not. तो उसी तरह से पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक, दैट विल बी द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर और नॉट. सो दैट विल कम इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन टू द डेबिट साइड एज व्हाट? टू ओपनिंग स्टॉक ओनली ऑफ फिनिश्ड गुड्स. क्योंकि रॉ मटेरियल और WIP का जो स्टॉक था वो तो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के थ्रू रूट कर दिया या नहीं? डिड यू गेट दैट? Now understand the point carefully. If into the trading account, if the credit side total is greater than the debit side total,
if into the trading account credit side total is more than the debit side total, then in that case we call that as to gross profit. Now this gross profit is transferred to the profit and loss account, because again this is what we are going to incur the various expenses or not. The indirect expenses what we call as. But if the situation is that your debit side is greater than your credit side, then in that case that will be called as by gross loss. And this gross loss is also transferred to debit of P&L account. Gross profit is transferred to the credit of trading account, but gross loss is transferred to the debit of profit and loss account. Did you understand this? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग के डेबिट में आया था. ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने वाले हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ही कैलकुलेट करने वाले हैं या नहीं. जस्ट राइट अ लाइन. द ट्रेडिंग अकाउंट includes all the direct expenses and incomes. The trading account includes all the direct expenses and incomes. तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड हुआ है तो दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट एंड पुट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डिड यू गेट इट? दैट्स व्हाट वी जस्ट डिड. यहां तक क्लियर है क्या सबके लिए? The next format that we need to talk about now is the profit and loss account. The ultimate profit of the business is calculated from in the profit and loss account. Therefore, we are going to talk about the next format now, that is profit and loss account. Again, even profit and loss account is a nominal account. Profit and loss account. This format is prepared, or this account is prepared primarily to ascertain the net profit of the business. Manufacturing account cost of production के लिए, trading account gross profit के लिए, और profit and loss account net profit calculate करने के लिए. Am I right? मतलब वो ऑनलाइन बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट ना. ऑनलाइन बिजनेस इज नेट. ऑलराइट. नाउ वी ऑब्जर्व कि जो ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर है दैट विल कम इनटू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नॉट. सो इफ इट इनटू आवर ट्रेडिंग अकाउंट देयर वाज अ ग्रॉस प्रॉफिट, it will come on to the credit side by gross profit brought down. Why brought down? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का ही बैलेंसिंग फिगर हम लोग यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या नहीं. And if there is a gross loss, it will be put onto the debit side as what? To gross loss brought down. दोनों सिचुएशंस एक साथ नहीं होगी. You'll either have the gross profit or you'll also have the gross loss. Did you understand this? So if there is already a gross loss, then you will always majorly have the net loss.
पर अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो आपके पास नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है. नाउ योर profit and loss account primarily include only the indirect expenses and incomes or non-operative incomes and expense. Now I have already explained these all terms, that's why I'm directly referring through those. Indirect incomes and expenses means what? The expenses which are incurred in the business not related to the core activity but support expenses. That is what we call as indirect expenses. But non-operating expenses means what? The expenses which are incurred into the business, not related to the business, day-to-day business activities. Those are neither related to the core activity nor related to the day-to-day activities of the business. Therefore, those are called as non-operative, not related to the operations of the business. That's why it's termed as non-operative. Am I correct? Yes or no? So, into our profit and loss account, debit side will have two indirect expenses. I'll just put the bifurcation into that. Two administrative expenses expenses which are incurred to carry on the day-to-day business activities. That is what we call as the administrative expenses, like electricity, telephone, maintenance, traveling, depreciation. यही अगर मशीनरी से रिलेटेड डिप्रिसिएशन होता जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को जाता. पर अगर ये ऑफिस प्रीमाइस, फर्नीचर, एयर कंडीशन जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है उसका अगर डिप्रिसिएशन होता है दैट कम्स इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एम आई राइट? देन टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, जो आपने कस्टमर, हमने एग्जामिनेशन में हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इस तरह के हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है. आई एम डूइंग दिस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि जब भी आप रेफर करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस है मतलब पीएनएल में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है मतलब पीएनएल में जाएगा, फाइनेंस से रिलेटेड है मतलब पीएनएल में जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है पीएनएल में जाएगा. सो दैट्स हाउ इट कम्स, राइट? Why I'm putting bad debts as selling and distribution? क्योंकि आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचे उसके अगेंस्ट ही तो आपका लॉस हुआ ना. And that's why bad debts come into the profit and loss account. Am I right? Then carriage outward. Carriage inward होता तो that is related to purchases. That will go into the trading account. But जब कैरेज आउटवर्ड दिया हो तो दैट इज रिलेटेड टू द डिस्पैच एक्सपेंसेस, गुड्स गोइंग आउट एंड फॉर दैट पर्पस वी आर इनकरिंग द एक्सपेंसेस. सो कैरेज आउटवर्ड गोज इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज इनवर्ड गोज इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट. एम आई राइट? देन टू फाइनेंस एक्सपेंसेस. जैसे हम लोग बिजनेस के लिए कोई लोन्स लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, उसके अगेंस्ट अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं तो दैट इज कंसीडर्ड एज द फाइनेंस एक्सपेंसेस, लाइक इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस, जो हम बैंक को पे करते हैं, बैंक चार्जेस. Is it point right? And therefore,
And in addition to that, the non-operative expenses, two non-operative expenses. Loss by fire, loss on sale of asset, these are considered as the non-operative expenses. Those non-operative expenses are also put into the P&L account debit side. Whereas onto the credit side, you'll have by indirect incomes. Like some of your supplier is giving you commission, discounts. This commission and discount goes into the P&L account credit side. All right. And then if you have sold some asset at profit, आपका असेट का बुक वैल्यू था से 10,000 रुपए, आपने उसको बेचा 12,000 रुपए में, तो आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ. That 2,000 का प्रॉफिट also goes into the P&L account credit side. So by non-operative incomes, those will also come into your P&L account credit side. Now, if your P&L account is also having credit greater than debit, there can be a situation where P&L is having, generally it will be a situation where P&L credit is greater than debit. In such case, this will be called as to net profit. This net profit of the business, which is the balancing figure, this net profit of the business will be transferred to capital. Because ultimate profit or loss of the business belong to the owner only or not. And therefore, the profit will be transferred to the capital. But if debit is greater than credit, it will be by net loss. Even this net loss will be transferred to capital. So if there is a profit, it will be added to the capital. If there is a loss, it will be subtracted from the capital. Is it clear for everyone? So these are the important formats related to the income statement of the business. The next format that we need to prepare is the format of balance sheet. But before I go into that, you need to absorb this all. Today, I'm going to share a kind of file with you in which these all things will be included in detail. The accounting entries that we have done, those will also be included in that. And then how do we prepare the final account? That is also given into that. But we are going to discuss that in detail from tomorrow on. So in tomorrow's lecture, we'll be talking about the format of balance sheet and how do we prepare these final accounts, on what basis, in what ways we prepare the final accounts. That's what we are going to talk about. Am I right with every one of you? I'll stop by here itself. I thought this will be extended, and that's why I told that I'll be taking the lecture after 11 o'clock. But now, because that is done, we'll continue tomorrow with the format of balance sheet. Thank you for today.